और प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है आज का जो दिन है 26 जुलाई 2022 है आज, और आज के ही दिन जो है करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। जहाँ तक करगिल विजय दिवस की बात है, या करगिल वॉर की आर्मी ऑफिशियल्स हैं वो इसमें शहीद हुए। बहुत ज़्यादा नुकसान जो है, भारी नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ। शुरुआत इस जंग की जो की वो पाकिस्तान ने की। तब आप में से कोई भी बच्चा शायद कैसा वो दिखे। और कुछ साथी आज करगिल दिवस पर अपने व्यूज प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो मैं अपने फर्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहती हूँ, समृद्धि शर्मा और सानिया। Respected principal sir, staff members and respected friends, I am Smriti Sharma, student of class 10, and today I am here to write out to present a speech on Kargil Vijay Divas. Here we are. Kargil Vijay Divas is commemorated every 26 July in India to observe India's victory over Pakistan in the Kargil War for ousting Pakistani forces from their occupied positions on the mountain tops of northern Kargil district in Ladakh in 1999. Initially, the Pakistani army denied their involvement in the war, claiming that it was caused by Kashmiri militant forces. However, documents by the Prime Minister of Pakistan, Nawaz Sharif, and Pakistan Army Chief of Army Staff, Pervez Musharraf, by General Ashraf Shahbaz. Kargil Vijay Divas is celebrated on 26 July every year in honor of the Kargil War. If death strikes before I prove my blood, I swear I will kill death. This is what late Captain Manoj Kumar Pandey, Paramveer Chakra, wrote in bold letters in his personal diary during the Kargil conflict. Namaskaram, I am Himani Kotwal, student of Government Higher Secondary School, Bhalda, class 12th. On 26 July every year, we celebrate the success of Operation Vijay. The operation launched by Indian Army to clear the Kargil sector. The Kargil conflict witnessed some of the most daring acts of bravery of the soldiers of Indian Army. Most notably, Captain Vikram Batra, Paramveer Chakra, Subedar Yogendra Singh Yadav, youngest recipient of the Paramveer Chakra, Captain Kalia, when his first salary was credited, he was dead. And Captain Manoj Kumar Pandey, Paramveer Chakra, who fearlessly led the assault on Jubal Top without care of his serious injuries, and his lost words being "Na chodno," meaning don't spare them. It is a pity that many of our fellow citizens have never ever heard the name of some of these brave soldiers. Brave soldiers who fought against all the odds and offered supreme sacrifice to uphold the honor, pride, and integrity of the nation. The Kargil Vijay Divas is noticed as a mark of honor to the courageous troopers who sacrificed their lives for the nation. The day is noticed to remind of victory and to commemorate our soldiers who had led their life for a better future. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram. आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। करगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में करगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 7 दिनों तक चला था, और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ। कारगिल विजय दिवस युद्ध में शहीद लेते हुए कहना चाहता हूँ, आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब होंगे वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। विक्रम बत्रा विक्रम बत्रा थे, उनको .5140 कैप्चर करने का टास्क मिला था, क्योंकि उन्होंने बिना कोई कैजुअलिटी के कैप्चर किया, और उसके बाद उनको .4875 को कैप्चर करने का टास्क मिला, जिसको वो कैप्चर करते करते शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहुत ही बहादुरी जांबाजी से लड़ा, और उनका जो स्लोगन था वो हमेशा ये था कि ये दिल मांगे मौत, और उनको करगिल का शेरशाह भी कहा। Come back wrapped in it, but I will be back for sure. These were the words said by Captain Vikram Batra before going to the war. Namaskaram, I am Vasu Kotwal, student of Government High Secondary School, Bhalda, class 9. On 26 July every year we celebrate the success of Operation Vijay. The operation launched by Indian Army to clear the Kargil sector. On this day, 527 sons of our land become immortal in the heart of all Indian citizens. Kargil Vijay Divas is the day on which the Indian Army won the war against Pakistan Army in 1999. Since then, the day has been observed every year to commemorate the efforts and sacrifice of Indian soldiers in the Kargil war. The Kargil conflict witnessed some of the most daring acts of bravery of the soldiers of Indian Army.
Violation of Shimla Agreement by the Pakistani soldiers resulted in the Kargil War. The war was raging in the area of Kargil, Ladakh and Siachen, which were places higher than the sea level. The area of Kargil was freezing during the war with a temperature of minus 10 degrees Celsius. Despite all these adversities, our brave soldiers fought in the war and recaptured our land from Pakistani infiltrators. Some of our fearless commandos who made it for us are Captain Vikram Batra, Grenadier Joginder Singh Yadav, Lieutenant Manoj Kumar Pandey, Lieutenant Balwan Singh, Captain Kalia and many more. The list of our fighters does not end here. Each and every soldier in the war was our hero. It is a pity that many of our fellow citizens have never heard the name of these brave soldiers who fought against all the odds and offered supreme sacrifice for the nation. Let's remember our brave hearts on this special day and mark our heart bravely for them. Jai Hind, Vande Mataram. सन्माननीय उपस्थित शिक्षकगण तथा मेरे साथियों, आप सभी को करगिल विजय दिवस के पावन अवसर पर शुभकामनाएं। मैं प्रियंशु राज करगिल विजय दिवस के अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले देश के वीर जवानों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि देती हूँ। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। अब मैं अपनी साथी देवांशु भगत को यहाँ पर बुलाना चाहूंगी, जो आपको करगिल विजय दिवस के बारे में आगे बताएगी। शिक्षागण तथा मेरे साथियों, आप सभी को मेरी ओर से शुभ दोपहर। मेरा नाम देवांशु भगत है और मैं 10वीं कक्षा की छात्रा आज आपको करगिल दिवस के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिन तक चला था और 26 जुलाई के दिन इसका अंत भारत की विजय के साथ हुआ था। भारतीय जवानों के सम्मान के लिए कारगिल दिवस मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान 550 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और 1400 के करीब घायल हुए। तिरंगा ऊंचा लहराने की जिन्होंने मन में थी ठानी, करगिल के चप्पे चप्पे वो लिए गए विजय की कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। Good afternoon to all of you. My name is Arjun Sharma from 9th class. Today I would like to say Kargil Vijay Divas. अपनी जान देकर जिसने तिरंगे की शान रखी थी, हाथ में बंदूकें उठाई थी उसने, भारत माँ की रक्षा की थी, चखाया था हार का स्वाद उसने पाकिस्तान को, उन्होंने मुंह पर लगाम लगाई थी उनकी। करगिल युद्ध में जीतकर भारत ने नए इतिहास की गाथा रचाई थी। First of all, I wish you all a very very happy Kargil Divas. It is a memorable day of Indian soldiers. The Kargil War was started on 3rd May 1999 and ended on 26 July 1999 with the victory of India against Pakistan. The victory was celebrated every year. Around 2 lakh lives of 527 Indian soldiers. Shri Atal Bihari Vajpayee was the Prime Minister of India during this war. Kargil War is also known as a Operation Vijay Divas. Some of the famous soldiers was sacrifice of his lives are Captain Vikram Batra, General J.J. Singh, General V.P. Malik, General V.K. Singh. Captain Vikram Batra was an officer of Indian Army. He was born on 9 September 1974 at Himachal Pradesh. He has been recognized because of his bravery. His father was government school principal and mother was a teacher. He was the third child and elder of twin son. He was interested in sport and participated national level competition in the youth parliamentary. He also have a green belt holder in karate. From college first year onward, he joined the NCC and attained the rank of NCC unit. Do something bigger in life, something great, something extraordinary, which may bring fame to my country. In 1996, he passed the CD selection board. He secured 35th rank in the merit. After the training, he Vikram informed his parents about his movement. The last phone call he made parents on 29th June, also known as Kargil conflict.
between India died on July 7th, 1990. At his last breath, he said the word Jai Mata Di. Jai Hind, Jai Bharat.